Okay guys, good morning. This is a quick tutorial on how to add Photoshop files and font files on your blog under any blog post. So let's do it, and I'm going to try this in front of you. So let's say I'm gonna give it a title that how to upload Photoshop and font files on blog. So I'm just gonna click on this star button or add button. To add, we have multiple options: adding image, adding gallery, video, GIF, internet, HTML code, some other code snippets, and this here add a file. So I'm gonna click here and it will give me option to drag and drop here. I'm just gonna click upload media, either drag and drop or upload from computer, and there I can go for various options. Mac or Windows, but there's a very brief difference. So I'm just gonna look for .psd file actually. So this is PSD file and it's a Photoshop file actually. So I'm just gonna click open and it will take some time, and it is here now. So I can use it from my gallery to my blog post to add it to page. This PSD file or Photoshop file is added now. Same goes to font files. I'm gonna click here and I'm again going to click upload media and here, and this time I'm going to go for fonts magazine. वैसे you can use TTF and OTF which are direct font files, but I don't know due to some reason कभी होता है कभी नहीं होता, मुझे कोई error नहीं आ रहा था, but वो प्रीव्यू नहीं कर रहा था, but WIX उसको अपलोड ज़रूर कर रहा था. So in order to avoid that trouble, आप पहले इनको direct try कर लो. Maybe like this. This is a font file you can see in the preview. I'm gonna open it and see if it is being uploaded. ठीक है, वो बता रहा है अपलोड हो गया है, बट इसका प्रीव्यू मुझे नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है. सो अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम आता है, सो यू कैन हैव अनदर ट्राई यूजिंग द जिप फाइल. और ये मेरे पास फॉन्ट की जिप फाइल है. जब आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो तो इट एक्चुअली डायरेक्टली डाउनलोड द जिप फाइल. अब उसको अनजिप करते हो फिर यूज़ करते हो. सो जिप फाइल ग्लैमर इसका नाम है. मैं इसको ओपन करूँगा और ये यहाँ पे विद इन नो टाइम यहाँ पे आ जाएगा ग्लैमर टेस्ट, राइट. और मैं इसको ऐड टू पेज कर दूँगा. सो मैंने फॉन्ट भी ऐड कर लिया, PSD यानी फोटोशॉप फाइल भी ऐड कर लिया. हम जस्ट गोना क्लिक ऑन पब्लिश और ये मेरा पब्लिश हो रहा है. ये पहले मैंने ट्राई के लिए किया था, उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ. अभी आपको यहाँ पे एक तरह से अनपब्लिश चेंजेस नज़र आ रहा है, तो आप एक दफ़ा इसको दोबारा से क्लिक कर लो, एडिट कर लो एंड पब्लिश अगेन कर लो एक दफ़ा. So it would be published. The error is gone. Click here and I'm going to publish from here. So it's publishing and now I can preview. This is a blog post which I just added a few seconds ago. After clicking it, it will preview me. Awesome. We can't find this page. Let's try again. Yeah, you know, WIX sometimes takes some time because it's a well-known software website, पूरी दुनिया use कर रही है. That's why. So this is how we learned how to add a Photoshop file or a font file on a blog post. Obviously कहाँ पे लगाना, I told you clearly. Under each design there would be a proper heading जिसमें लिखा होगा Photoshop files for this design and font files I use in this design, कुछ इस तरीके से. और देन ताकि एग्जामिनर क्या फ़ायदा, एग्जामिनर आपकी PSD फाइल फोटोशॉप फाइल्स को डाउनलोड करके अपने फोटोशॉप में ओपन करके अगर देखना चाहे कि अच्छा आपने कैसे लेयर्स बनाई, कैसे काम किए, तो वो देख सके. सो ऑब्वियसली आपने मेहनत किया, सो यू शुड टेक प्रॉपर क्रेडिट ऑफ इट. सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू और शेयर विद यू टुडे. सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूजफुल होगा. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज आस्क मी. सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.